Hello. Hello. Good afternoon, Yes, sir. Good afternoon. Screen is visible. Yes, sir. Voice is clear. Yes, sir. Okay. So before going to the class, anyone have any doubt from the previous class? Hello. Any question? No, sir. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. आज क्या डेट है? 2 तारीख. Okay. So now example. Using the convolution of sequences prove that factorial n and 1 by also factorial n. This is the 2 power n by factorial n. So using the convolution of sequences, we have to prove that this one. So how we prove? Now start from this left side. This is left hand side. So left hand side equal to, see here we defined this is this is the first sequence and this is the second sequence when you define the convolution. So summation k equal to 0 to n. The one is gk and another is replaced by fn minus k. So what you do here, same thing apply here. Summation k equal to 0 to n, 1 by n replaced to k, and another is 1 by n minus k factorial. Okay. Now expand this one. K equal to 0, substitute here. So 1 by factorial 0. Factorial 0 is 1. And 1 by factorial n factorial plus 1 by factorial 1 and n minus 1 factorial plus 1 by 2 factorial n minus 2 factorial plus factorial 3 n minus 3 factorial plus 1 by factorial r n minus r factorial plus plus the last one 1 by factorial n and n minus n. So factorial 0, this is the 1. So this is okay. So now take the common 1 by n factorial. So first term 1 plus 1 by n minus 1 factorial plus n minus 2 factorial
1 by factorial 3 n minus 3 factorial dot plus 1. Now this is, so therefore this is 1 by n factorial 1 plus सर सेकंड टर्म no 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 हाँ एक न एक प्रॉब्लम सब में है। ये वाले सिस्टम में सब अच्छा है तो इसका माउस खराब है। छोड़ो, इसको काट के दोबारा लिख देता हूँ। जितने में इसको मिटाने में टाइम वेस्ट करूंगा उतने में दोबारा लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ से चेक करते हैं। 1 बाई फैक्टोरियल n, so 1 plus, now in this one factorial n, if you take common, so here multiply by factorial n, so factorial n is n into factorial n, we will write n into n minus 1 factorial, so ये होगा ना, तो factorial n minus 1 factorial n minus 1 cancel, so this is the 1, correct? Now in the second one, factorial n is n minus 1 and n minus 2 factorial, so this n minus 2 factorial n minus 2 cancel, so n minus 1 n minus 1 by factorial 2. Okay, plus in the next one n minus 1 n minus 2 factorial n minus 3, so factorial n minus 3 cancel, so in the numerator you will see n minus 1 n minus 2 by factorial 3 plus dot plus in the last one. Now this is correct. So now this is 1 by n factorial. First one is nc0, second one is nc1, this is nc2 dot ncr dot plus ncn. So what is this one? How can you write this one? See, 1 plus x ke power n. What is this is? Anyone? Hello? यस सर। So ये nc0 plus nc1 x plus nc2 x square plus ncn x ke power n. I think we write. यस सर। Now in this one, if you put x equal to 1, so nc0 left side is 1 plus 1 2 power n, and this is nc0 plus nc1 plus nc2 dot plus ncn. So therefore we can write the terms in the bracket. If you add this one, so all are represented by 2 power n, so 2 power n by factorial n. So this is the right side. Okay, now next one. इसको ऐसे मिटा सकते हैं कि नहीं? हाँ, मिट तो जा रहा है, यानी कि माउस का जरूरत ही नहीं। ओके, ठीक ठीक। एग्जाम्पल, गुड। So find the
Z transform of the Fn, convolution of Fn and Gn, where first one Fn is e power n and Gn is q power n, and second one Fn equal to e power n equal to Gn. Both are same. Also verify convolution theorem. In each case. Okay. So now solution. Now find first of all Fn star Gn. So write Fn Gn. This is summation and C from the starting. This is okay. So right, this is p power k into q k power n minus k. If you want, so write Fn strict Gn. This is summation n equal to 0 to infinity. ठीक है, कुछ गड़बड़ लिख रहा हूँ. n equal to 0 to n, and this is fk and g n minus k. Okay, so see, so here this is k equal to 0, k equal to this is k equal to 0 to n. So k equal to 0 to n. एक मिनट. Okay, okay. K equal to 0 to n, p power k, q power n minus k. Now expand this one. K equal to 0, so p k power 0 is 1, q k power n plus, and this is right p0 q power n. The next one is k equal to 1, n minus 1. R plus p power n and q power g. Now this is, now what you do, this is the finite gp. By gp, see p power, p power 1 by this one, p power 1 q k power n minus 1 divided by p k not q n. This is p power 2 q power n minus 2 and divided by p q k power n minus 1. You see, in the both cases you will get same. See, क्या मिलेगा? p power 0 is 1. So in the numerator, this is p
and q को power n cancel, q को power -1 goes to the denominator, so that is q. Now see here, if p, this is cancel, so p is the numerator and q के power n, this is cancelled, so q के power -2 goes to the denominator, so q square into q के power -1, so that is q. So therefore this is the r. So in the case of finite gp, the sum is क्या होता है, a r power n -1 divided by r -1. तो बताओ क्या होगा इसको सिंप्लीफाई करके. जल्दी बताओ क्या होगा. r is p by q and a is a equal to q power n. So this is q power n, r means p by q, p power n, q power n -1 and divided by r -1, p by q -1. अब इसको सिंप्लीफाई करके बताओ क्या होगा. सर q into क्या होगा. q into p power n minus q power n by p minus q. और सिंप्लीफाई करो. This is this one. अब इसको वेरीफाई तुम लोग करते रहना, बहुत टाइम लगा रहे हो. Now z transform of p power n, this is z by z minus p, and z transform of q power n, this is z by z minus q. First one, suppose this is denoted by f of z, and second one, this is denoted by g of z. So therefore z transform of fn equal to z transform of power n. So therefore if you substitute the both values from here, so z by z minus p and z by z minus q, so therefore this is z square z minus p z minus q. So now here apply the partial fraction.
So apply the partial fraction. Now you can find this is सिंपली जेड स्क्वायर को बाहर कर लो, दोनों को इससे इजीली फाइंड कर सकते हो एज यू विश. So you can write this is q minus p, this is qz by z minus q minus this is pz divided by z minus p. So again you have to verify. So this is very easy, you can easily verify that. Okay. Now see, so z transform of this is, you write this one. So when this one goes to here, so inverse z transform of this is the convolution of f and g. So we can write inverse z transform of fz gz. This is, so inverse z transform of fz gz, this is the inverse z transform of, write this thing आ गया z square by this one. Okay, this is z square by z minus p z minus q. Yeah, you can directly write inverse z transform of actually this whole thing. So see, एक minute. You can directly write, so 1 by q minus p, and in this one, in first one, yes, पहले लिख लेते हैं, बाद में कॉमन करते हैं. 1 by q minus p qz by z minus q minus pz by z minus p. This is, so you know that key here distributive law hold. So now 1 by q minus p goes to the outside, and also q. So inverse z transform of z upon z minus q. This is minus. See, in this one, p goes to outside, so p divided by q minus p, this term goes to outside, inverse z transform, the remaining term is z by z minus p, z by z minus p. This is, so now this is q by q minus p, and this is the sequence q power n, and minus p by q minus p, this is the p power n. So when you simplify that and take the common, see q minus p in the denominator, and numerator q power n plus 1 minus p power n plus 2. So you can verify that this is correct. Verified. So similarly, you can also do
The example second as like example 1. Okay, so this is again, this is the exercise. Okay, now next example. Using convolution, theorem, find Z inverse three. Okay, solution. So suppose fz equal to z by z minus 1 and gz is, again this is z square, we can write z into z, so z by z minus 1 and z by z minus 3. So this is fz and this is gz. So from this one, if you find the sequence fn, so apply the inverse inverse z transform both sides. So z inverse of fz, that is the fn. Okay, so fn is, this is 1 power n, and from this one, and this is also, suppose okay, this is inverse z transform of fz, that is the fn. So now yeah, also you can write here, okay, here apply inverse z transform both sides. So if you apply the inverse z transform both sides, so this is the inverse z transform of fz, that is the fn, and the right side is 1 power n. Similarly here, this is gn, that यहाँ भी suppose, so this is 3 power n. Okay, so now inverse z transform of fz gz, this is see the statement of convolution theorem. Z transform of this is, so when you apply here, so inverse z of fz gz is fn star gn. मैं लिखाऊंगा, this is okay, and this is summation k equal to 0 to n fk gn minus k by this one. Okay, so now write so this is 1 power n strict 3 power n. So now we can write this is summation k equal to 0 to n 1 के power
n के जगह पे क्या होगा k, एंड 3 के पावर क्या होगा n माइनस k. So now, right, expand this one, k equal to 0, 1 के पावर 0, so 1, 3 के पावर k equal to 0, so 3 के पावर 10 प्लस 1 के पावर 1 तो 1 इंटू 3 के पावर n माइनस 1, 1 के पावर 2, तो ये सारा तो 1 ही होता जाएगा, एंड 3 के पावर n माइनस 2 डॉट 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 प्लस, तो लास्ट टर्म क्या होगा n माइनस n यानी कि 1. तो एक्चुअली ये क्या है कि दिस इज द 3 पावर n माइनस 1, 3 पावर n माइनस 2, 3 पावर n माइनस 3 प्लस 3 पावर n माइनस r प्लस 3 पावर n माइनस n यानी कि 0. ठीक है, सो दिस इज 1. So now find, this is definitely this is the GP. ठीक है, ये GP है. So what is the R? 3 के पावर n माइनस 1 बाई 3, तो क्या होगा 1 बाई 3. 3 के पावर n माइनस 2 बाई 3 के पावर n माइनस 1, n कैंसिल, माइनस 2 नीचे चला जाएगा, तो 3 के पावर 2 माइनस 1, हाँ, सो 3, इसमें भी भाई 3 माइनस 2 यानी कि 1, सो r इज 1 बाई 3. नाउ सम इज, चलो फाइंड करके बताओ क्या होगा. 3 के पावर n ये होगा ना, और r के पावर यानी कि 1 बाई 3 के पावर n माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाई 1 बाई 3 का पावर n प्लस 1 ना हो जाएगा सर, n प्लस 1 टर्म्स है यहाँ पे, n प्लस 1 टर्म हो गया ना सर. नहीं, मैंने ये थोड़े लिख रहा हूँ कितने टाइम से, मैं तो खाली ये बोल रहा हूँ 1 बाई 3 टू द पावर n लिखे ना, तो वहाँ n प्लस 1 ना हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स तो n प्लस 1 हो गया ना यहाँ पर. अरे कहाँ हम टाइम्स कहाँ लिख रहे हैं, हम तो पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, ये तो सारे सीरीज को ऐड कर देना है ना. जीपी में सारा सीरीज को जो ऐड करते हैं, फाइनाइट सीरीज में क्या लिखते हैं, पहला टर्म, उसके बाद जो उनका जो डिफरेंस है वो आर फाइंड कर लिया, हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, ए मीन्स फर्स्ट टर्म, उसके बाद आर के पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1. अब इसमें कहाँ हम ये कुछ करें सर, यहाँ पर जैसे नंबर ऑफ टर्म्स है ना r टू द पावर n में, तो यहाँ तो नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1 ना हो गया. अरे यार, तो हम कहाँ पे लिखे हैं ये चीज, 1 by 3 power n. हेलो, अच्छा तुम ही बताओ, ये इसमें क्या लिखे, तुम बताओ. सर 1 बाई 3 टू द पावर n प्लस 1, 1 बाई 3 टू द पावर n प्लस 1 हो जाएगा सर. वहाँ पर जो n लिखे वहाँ n प्लस 1 ना होगा सर. एक मिनट, अच्छा तो सिंपलीफाई करके बताओ कितना होगा. Three to the power n plus 1 minus 1 by 2. 3 के पावर n plus 1 minus
-1/2। ये तो इससे भी आ जा रहा है ये चीज, इसको सिंप्लीफाई करके देख लो। सर इसी से आएगा, ऊपर आपने गलत लिया था, क्या लिया था? वो q⁴n+1 माइनस p⁴n+1। तो तुम तो इसी से कर रहे हो ना, तो 3 तो कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस और यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो गया। सर n+1 लिया तो आ रहा है आंसर। तो n+1 थी तो लिया है। सही कह रहा है। हेलो। यस सर। हाँ, ये इससे नहीं आएगा क्योंकि सर वो r⁴ नंबर ऑफ टर्म्स होता है। हाँ, सही सही कहा, करेक्ट करेक्ट, ये सही है, मैं भी अभी वेरीफाई किया। 3n+1 -1 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज करेक्ट, ये सही है, सही। क्योंकि ये करते तो हमने दोनों से चेक कर लिया, ठीक है, ये सही है। गुड, वेरी गुड। Your sequence is factorial n and another sequence gn is sequence n square। तो इसको तुम वहां से कर लेना n into 1 and this is if you find the z transform of this one, so इस केस में क्या करेंगे, n स्क्वायर को n into n, so -z d by dz का यूज करके यू कैन फाइंड, ठीक है। हेलो। यस सर। तो ये शायद हम लोग कर भी चुके हैं इस टाइप का, एक मिनट। नहीं, इसमें नहीं, ये मुझे लग रहा है ये n स्क्वायर n, नाउ इन दिस वन देखो n स्क्वायर का z ट्रांसफॉर्म यू कैन फाइंड n, so n into 1, so this one similarly you can find the z transform of n square, ठीक है। so okay, so fn gn, this is
fn star gn summation k equal to 0 to n एंड इसको चाहो तो n को k से रिप्लेस किया, सो दिस इज k स्क्वायर, और ये हमारा हो गया n माइनस k, क्योंकि अगर इसको हम k करते तो फिर ये n माइनस k का स्क्वायर होता। इससे अच्छा है कि जितना सिंपलर फॉर्म है। नाउ दिस इज ये n इंटू के स्क्वायर, n इंटू के स्क्वायर है ना, तो n को बाहर कर लिया, k इक्वल टू 0 टू n, दिस इज के स्क्वायर माइनस k इंटू के, यानी कि k क्यूब, k equal to 0 to n. This is so therefore you can find the first one and second one. So this is the what? This is the inverse Z transform of fz into gz. This is, and we know that in the previous class you can find and Z transform of ठीक है। सो n और शायद n स्क्वायर है, जो भी है n स्क्वायर, यू कैन फाइंड हमारा क्वेश्चन n and n स्क्वायर है ना, सो n and n स्क्वायर, so therefore we can find Z transform of their convolution. तो ये तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो this is the exercise. अब हमारा एक चीज बस बच गया, इसके बाद है the application of Z transform. So before move to the application of Z transform, there is the last topic, and after this one we will discuss why we study the Z transform and their simple applications. So mainly this is the use in the difference equation. So okay, anyway we will discuss later. First we study the last thing before the application of Z transform. Initial value theorem. Let Z transform of the sequence fn that is denoted by fz, and Z transform of the another sequence gn that is denoted by gz. अच्छा, इसमें एक ही की जरूरत है, दो की जरूरत नहीं। Okay, and mod z region of convergence, this is the 1 by r, and stop. Then fp is limit infinity in the bracket fz minus f naught
etc. So now proof. So first of all, we have this one. This is, so this is summation n equal to 0 to infinity fn z pod minus n. So this is f0 plus f1 by z f2 by z square plus a by plus dot infinite. Okay, n equal to 0 to infinity, so this is go to infinite. Okay, now what we do, the left side is fz, so in the both sides multiply by z power p. So z power p fz. So now here z power e f0 plus f1 by z f2 by z square plus fp minus 1 by z power p minus 1 and plus zp cancel, this is the fp plus and the rest are zp, this is एक मिनट, zp से लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया, zp this one plus zp cancel. Okay, so see in this one p plus 1, तो यहाँ zp से मल्टीप्लाई किया तो नीचे क्या बचेगा, z ep cancel plus fp plus 2 by z power p plus 2, so this is z square z cube dot, this is infinite series, this one. So this is the equation number 1. Take limit z tending to infinity. So this is we want to write this one, so write fe this term equal to, now z tending to infinity, so this is 0 0 0 0, so left side this is limit to infinity, so here z power e and fz, तो
जेड पावर पी को कॉमन ले लेते हैं, जेड पावर पी कॉमन, ये टर्म तो यही रहेगा, ये सारे टर्म लेफ्ट में चला गया। सो एफ पावर पी, जेड पावर पी कॉमन, सो एफ जेड माइनस दिस इज एफ नॉट माइनस f1 by z minus f2 by z square minus dot 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 minus a minus 1 and plus 0. So we will get this one. Okay. ये प्रूव करना था। So now remark, set p equal to 0, 1 and 2. So for p equal to 0, p equal to 0, we find fz is from equation 1. Equation 1. So see, in this one, p equal to 0, so z power 0, 1, fz, z power 0, 1. So write या इसमें इसी में करते चलो, p equal to 0, f naught is limit z tending to infinity, p equal to 0, so z power 0 खत्म, यानी कि 1. So z fz minus f0. And second, for p equal to 1, so f1 is limit z tending to infinity, this is z fz, कुछ गड़बड़ किए क्या, ये f0, so z fz, z tending to infinity fz, ये पोर्शन भी नहीं होगा ना, दिस इज, और यहाँ पे माइनस एफ नॉट z fz, and this is z fz minus z f naught. So therefore, I'm going to take z common. So we can write fz minus f naught. So for third one, p equal to 2, f2 is limit z tending to infinity, z square fz, z square f naught minus z f. So when you substitute from the previous, take the common, not as previous. Limit z tending to infinity, take the z square common. So this is fz minus
f naught minus f1 by z. So similarly you can find the rest things. And this is the last theorem. Final value theorem. So let Z transform of the sequence Fn, this is Fz, in region 1 by R. Then Fz. So we have to prove this one. Fn plus 1 Z transform. So first one is plus 1 and this is Fz as a number. Now using the shifting theorem. Using the shifting theorem, Z transform of Fn plus 1, this is the Fz minus F naught. So now substitute in the 1. So Z transform of Fn plus 1 minus Fn, this is what? Z transform of Fz minus F naught and minus this is term Fz. So this is the equation number 2. Now again write Z transform of Fn plus 1 minus Fn. So by traditional, directly apply the definition of Z transform of the sequence. Summation n equal to 0 to infinity, and this is Fn plus 1 minus Fn into Z ke power minus n. So now expand this one. So when you expand n equal to 0, so F1 minus F naught. F1 minus F naught plus n equal to 1 to F2 minus F1 and Z ke power minus 1. The next F3 minus F2 Z power minus 1. F plus 1 minus Fr Z के power minus R infinite, या लास्ट टर्म में लिख सकते हैं, ठीक है वही है, छोड़ो infinite. So this is the equation number 3. So from 2 and 3, equating 2 and 3, so both of the left hand side are same. So now for the from the right hand side of 2 and right hand side of 3, both are the same. So right hand side of 2 Z into, तो इसमें कुछ कॉमन ले सकते हैं, अभी लिख लेते हैं Fz माइनस F नॉट, Fz माइनस F नॉट एंड माइनस Fz.
minus fz equal to, and here f1 minus f0 plus f2 minus f1 z power minus 1 plus f3 minus f2 z power minus 2 plus fn plus 1 minus fn z power minus n dot dot dot. This one. So left hand side को और भी चलो ठीक है. Okay. So taking limit both sides at z tending to 1. So limit z tending to 1, and now in this one take इसमें से fz take common, so z minus 1 into fz, z minus 1 into fz, ठीक है, minus f naught. Okay, so this equal to 8 minute. Hello. Equal to z tending to 1, in here substitute z equal to 1, z equal to 1. So what happened? f1 minus f0. So f1 cancel. Okay, and here f2 minus f2, the everything is cancelled. So now this is term fn and z equal to 1. So this term is only available. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर माइनस एफ नॉट, एक तो ये टर्म, एंड प्लस लिमिट कहाँ गया, लिमिट z टेंडिंग टू 1, टेंडिंग टू 1, और क्या बच जाएगा, fn. So this term and this term cancel. तो हमारे पास क्या बच गया, लिमिट, ये कुछ गड़बड़ लिख दिया यहाँ पे, लिमिट, एक सेकंड, limit n tending to infinity. Now this is correct. So therefore limit n tending to infinity fn, this is limit z tending to 1, z minus 1 of fz. Now this is complete the proof. ठीक है, चलो अब इस पे नेक्स्ट क्लास में इसको एक बार तुम लोग पढ़ भी लो अच्छे से, जहाँ डाउट होगा उसको नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर लेना. एंड आफ्टर दिस वन, इन द नेक्स्ट क्लास व्हाट वी विल डू, we will solve some examples on the basis of initial and final value theorem. And after these examples, now we will move to the application of Z transform, that is the difference equation. Okay, so any query, any question? Hello? No, sir. ठीक है, चलो तब रखने देते हैं. Thank you, sir. ठीक, ओके, बाय.